Hello everyone, welcome to this video on solid waste management. So in solid waste management this lecture will see what is a solid waste, what are the types of solid waste available, what are the steps involved in a solid waste management in a typical Indian city. Then we'll see what are the solid waste management rules available. Then we'll also see some of the data related to solid waste generation in India today. These are all the points which we are going to cover in this video. Stay till the last. So what is a solid waste? Any waste, any product, any material which has been refused, which does not has which does not hold any further value for us, which has been discarded is considered as a solid waste. कोई भी ऐसी चीज़ जिसका हमारे लिए कोई फ्यूचर वर्क नहीं है, जिसका हमारा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसकी हमारे पास अब कोई वैल्यू नहीं रही, जिसको हमने डिस्कार्ड कर दिया है, वो सब सॉलिड वेस्ट कहलाते हैं. Now this solid waste can be anything ranging from your clothes, food material, electronic items, anything, packaging material mostly. So we will see what are the types of solid waste. So now there can be n number of ways of differentiating or categorizing solid waste. Solid waste को आप कई तरीकों से categorize कर सकते हैं depending on कि आप किस चीज़ के लिए categorize कर रहे हैं. However, in India, Central Pollution Control Board जो है वो solid waste को इन 6 categories में categorize करती है. So we have a separate specific solid waste management rules for each of this category. ये 6 कैटेगरीज क्या है? hazardous waste, ऐसे कोई भी वेस्ट जो हमारी हेल्थ के लिए हेल्प हार्मफुल है, those are considered as hazardous waste. E-waste, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के वेस्ट. टुडे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के वेस्ट निकलते जाते हैं, मे बी मोबाइल, लैपटॉप्स, स्क्रीन्स, चार्जर, ईयरफोन, anything. All these comes in e-waste. Then municipal solid waste, वो सारा solid waste जो कि एक सोसाइटी पे, एक म्यूनिसिपैलिटी में जनरेट होता है, एक रेजिडेंशियल एरिया, रेजिडेंशियल कॉलोनी से जनरेट होता है, those are considered as municipal solid waste. Biomedical waste, any waste which is generated within a medical facility, premises, hospital or treatment center. हॉस्पिटल, ट्रीटमेंट सेंटर या किसी मेडिकल फैसिलिटी के प्रीमाइसेस से जितना भी वेस्ट निकलता है दैट आर पोटेंशियली हार्मफुल, एंड दोज आर कंसिडर्ड एज बायोमेडिकल वेस्ट. देन प्लास्टिक वेस्ट, वो सारे वेस्ट विच आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक, दोज आर प्लास्टिक वेस्ट. एंड देन लास्ट कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट. तो जितनी भी कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन एक्टिविटीज चलती है वहाँ पे मेजरली आपको आयरन बार्स, सीमेंट, कंक्रीट, सैंड, ये सारी चीज़ें मिल सकती है, अदर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड आइटम्स. सो दोज आर कंसिडर्ड एज सॉलिड वेस्ट एंड ऑल दीज वेस्ट needs to be treated differently, and hence Central Pollution Control Board in India categorizes them differently. So these are the 6 uh, classification of solid waste according to Central Pollution Control Board in India, and for each type of this waste we have a separate rules for management of these waste. So this graph shows a typical generation of solid waste, the categorization of solid waste in developed countries versus typical Indian city. So see, this is basically this ये जो difference है ये basically purchasing power या फिर living standard lifestyle of a developed country is much different compared to India. India is still a developing country. However, अभी हम काफी develop हो चुके हैं, but still India is a developing country. However, for a developed country, their purchasing power, their lifestyle is different. That's why there is a huge difference between various categories of solid waste which is generated in developed countries versus typical Indian city. इंडियन सिटी में आप देखोगे तो ऑर्गेनिक या फिर फूड वेस्ट ऑलमोस्ट 50% है, वेयर वही चीज़ डेवलप्ड कंट्रीज में 21% है. पेपर वेस्ट यहाँ पे 33% है, इंडिया में करीब 5% है. सो लाइक वाइज दिस वेरिएशन इज देयर एंड आई सेड इट इज बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल. Now this is solid waste generation data for different Indian cities.
सबसे कम कहाँ का दिखा रहा है ये? कवारा, कवारा टी। एंड सबसे ज़्यादा आप देखोगे तो ये दिखा रहा है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद। सो एज यू ग्रो, एज यू go towards metro cities, the waste generation is higher. Of course, metro cities में population भी बहुत है, but likewise इनका waste generation भी बहुत ज़्यादा है. How much it is? 5,320 tons per day. This is huge. Okay. Now this another graph shows कि population कैसे बढ़ रही है, उसके साथ साथ land requirement कैसा change हो रहा है, and solid waste generation कैसे change हो रहा है in terms of metric tons per day. So आप देखोगे metric tons per day पे solid waste जिस rate से बढ़ रहा है till the year 2051, population is increasing at a steady rate, and the land requirement is increasing at much faster rate. That means what we can infer for this graph from this graph is कि land requirement पे बहुत ज़्यादा stress होने वाला है for the coming years, because जिस rate से land requirement बढ़ रहा है, of course we have a finite amount of land, so उस पे stress बढ़ेगा. Population is increasing at a steady rate, आप देख सकते हो population steady rate से बढ़ रहा है. Solid waste kind of यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है. So basically what we can infer from this is there will be huge pressure on land requirement. This is again a data for solid waste. Now collection of solid waste. So collection of solid waste is basically done at 8 to 10 a.m. in the morning, जो कि usually लोगों का morning का time होता है. That time people are either getting ready or they are going for their work. So इसी time पे solid waste municipality area या houses से collect किया जाता है in small carriers like this small truck or even much smaller tricycles. From there, it is taken to a TSDF site, treatment storage facility. Okay. So TSDF site पे क्या होता है, जितनी भी waste आई municipality से, now a whole city or a particular area is divided into number of small areas, और वो सारे small area पे अपना एक एक TSDF site होगा. उस TSDF site पे क्या होगा, जितना भी waste whatever is collected उसका सेग्रीगेशन होता है, और अगर उसमें से कोई आप वैल्यू वाली प्रोडक्ट्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, सपोज मे बी यू आर एबल टू एक्सट्रैक्ट सम copper, maybe you are able to extract some iron, so those things are segregated. Now after segregation, and of course because this is a TSDF site, यहाँ पे काफ़ी सारा waste आएगा, so all these waste are now carried in a big trucks or this trailers to finally to the treatment facility or land disposal site. In India अभी majorly uh, land fill sites पे जाती है. So this is how this solid waste generated are carried. Now when this small carriers जो कि हमारे घरों से रेसिडेंशियल एरिया से सॉलिड वेस्ट कलेक्ट करते हैं, their criteria to collect solid waste is लीस्ट डिस्टेंस कवरिंग मैक्सिमम एरिया. सबसे कम डिस्टेंस पे सबसे ज़्यादा एरिया जो कवर करेगा, दैट इज रूट इज प्रेफरेबल ऑफ कोर्स, बिकॉज इकोनॉमी इज इन्वॉल्व इन दिस थिंग. इकोनॉमिकल होना चाहिए, आप कम एरिया ट्रेवल करोगे आपके पैसे कम खर्च होंगे. सेकेंड थिंग, टोटल इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इकोनॉमी, ईच स्टेप इफ यू सी, जो सॉलिड वेस्ट कलेक्ट करने का जो स्टेप है, दैट इज द मोस्ट कॉस्टली पार्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. किसी भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव या कॉस्ट रिक्वायरिंग पार्ट है वो होता है सॉलिड वेस्ट कलेक्शन एंड ट्रांसफरिंग. सॉलिड वेस्ट को आप उनके घरों से कलेक्ट करके TSDF साइट से कलेक्ट करके फाइनली लैंडफिल साइट तक ले जाना, ये सबसे ज़्यादा कॉस्ट कंज्यूमिंग थिंग है. एंड फॉर दैट जो क्राइटेरिया है वो है लीस्ट डिस्टेंस कवरिंग मैक्सिमम एरिया. सेकेंड, ये चीज़ हो जाती है मॉर्निंग में 8 to 10 a.m. नाउ TSDF साइट में ये 10 से 4 5 6 PM तक ये काम यहाँ पे चलता है सेग्रीगेशन का. एंड अगर छोटा मोटा कोई ट्रीटमेंट दे सकते हैं यहाँ पे, शेडिंग या फिर कम्यूटिंग और मैरिएटिंग, दोज थिंग्स आर कन्वर्टेड इन हियर इन TSDF साइट. फाइनली TSDF साइट से जो बड़े
कैरियर्स होते हैं या ट्रेलर्स होते हैं, ये सॉलिड वेस्ट को लेके जाते हैं लैंडफिल साइट पे। नाउ द प्रेफरेबल टाइम फॉर दिस इज एट नाइट टाइम, बिकॉज नाइट टाइम पे ट्रैफिक कम होगा, ये न्यूसेंस कम क्रिएट करेगा। मेनी टाइम्स यू माइट हैव एक्सपीरियंस दिस, कि जब ऐसे बड़े ट्रेलर्स एक सॉलिड वेस्ट कैरियर रोड पे जाता है, तो अराउंड दिस देयर आर सम लिटरिंग, मीन्स इसके कुछ पार्ट्स, कुछ सॉलिड वेस्ट इसके साथ गिरते चलते हैं, एंड देयर इज अ big bad odor coming out of this around this truck, so it creates a nuisance for public in general, and that is why it is preferred that this transportation should happen at night time. However, not mandatorily, but it is preferred that this should happen at night time. Now, disposal of solid waste, there can be very different techniques for disposal of solid waste. Sanitary landfilling or scientific landfilling is a scientific way of disposal of solid waste into landfill sites. इंडिया में अभी मेजरली लैंडफिल होता है, बट दैट इज नॉट सैनिटरी और साइंटिफिक लैंडफिल, मीन्स इट इज जस्ट डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट। आप हर सिटी के अराउंड बड़े बड़े माउंटेन्स देख सकते हो, विच इज बिकॉज ऑफ डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट, but it has to be done in a scientific way, in a planned way, which is not yet happened in India. Some part it has started, but a lot of the cities are yet to cover this. कंपोस्टिंग, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है आप उससे कंपोस्टिंग कर सकते हैं, यू कैन मेक मैन्योर आउट ऑफ इट एंड यू कैन derive वैल्यू आउट ऑफ इट। कंपोस्ट को यू कैन sell in the market and you can derive value out of it. बट द थिंग रिक्वायर्ड इन दिस इज, आपके जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट है ओनली दैट कैन बी डन, दैट कैन बी यूज फॉर कंपोस्टिंग। और इंडिया में 40-50% सॉलिड वेस्ट का ऑर्गेनिक पार्ट होता है, सो यू कैन यूज दैट, यू कैन डू सेग्रीगेशन। अब सेग्रीगेशन का, सॉलिड वेस्ट का सेग्रीगेशन कीजिए, एंड वॉट एवर इज द ऑर्गेनिक पार्ट दैट यू कैन टेक एंड यूज फॉर कंपोस्टिंग। देन कम्स इंसिनरेशन एंड थर्मल पायरोलिसिस। आप सॉलिड वेस्ट को हाई टेम्परेचर सच एज 14,000 डिग्री सेल्सियस पे आप उनको बर्न करो। इनको बर्न करने पे ये at such a high temperature nothing stays, and what remains is the ions. It is called as syngas. So syngas is created incineration and thermal pyrolysis में। Incineration is done in presence of oxygen and thermal pyrolysis is done in absence of oxygen. ये major difference है। Incineration presence of oxygen, pyrolysis absence of oxygen, that is the major difference. And these both involve burning of solid waste at high temperatures such as 14,000 degrees Celsius. तो उतने टेम्परेचर में nothing stays and only it is converted into ions form. जो solid waste है that is converted into ions form and it is basically called as syngas. syngas को फिर आप further electric के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। नाउ डंपिंग इनटू सी, सॉलिड वेस्ट को आप सी में भी डंप कर सकते हो। इसके लिए हाउएवर रूल्स है कि एटलीस्ट इट शुड बी डन एट 10 किलोमीटर्स फ्रॉम द शोर लाइन। शोर आपकी जो नदी का या सी का किनारा है वहाँ से 10 किलोमीटर्स फार हो, 3 to 5 किलोमीटर्स अंडर द सरफेस ऑफ वाटर हो, मतलब जो वाटर का सरफेस होगा उससे आप 3-5 किलोमीटर अंदर करें। एंड ड्यूरिंग लो टाइड, अगर हाई टाइड में आप डंप करेंगे देन देयर इज मच प्रोबेबिलिटी, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि सॉलिड वेस्ट वापस शोर पर आ जाए। हाउएवर वी ह्यूमंस हैव डम्प्ड सो मच ऑफ सॉलिड वेस्ट नाउ कि आप न्यूज़ में पढ़ते होगे अचानक सडनली देयर इज flowing back of solid waste at various shores throughout the world. वर्ल्ड में अलग अलग शोर्स पे आप यू कैन सी दैट देयर आर डिफरेंट इवेंट्स जब सॉलिड वेस्ट वापस ट्रेवल कर आते हैं शोर पे, बिकॉज वी हैव डम्प्ड सो मच ऑफ सॉलिड वेस्ट in the sea. We will see that data also in coming slide. Pulverization and shedding. Pulverization and shedding is basically not a treatment. It is just cutting of solid waste into smaller part. छोटे छोटे आप parts में solid waste को cut करते हैं so that you can further use it for any other treatment. And autoclaving is killing of total microorganism. Uh, it is like minimum criteria is at 121 degree Celsius for 10 minutes. अगर आप 121 डिग्री सेल्सियस में 10 मिनट्स तक रखते हैं
So at that temperature all the microorganisms are killed. So if microorganisms are killed, that means pathogens are also killed, and when pathogens are killed, then it is not harmful for it is not harmful from the point of view of human health. So autoclaving is done that, and it can be done at 121 degrees Celsius for 10 minutes. So these are the ways through which you can dispose solid waste. Now this picture shows कि black part जो है, that is land area. Now of course these are different countries that we don't currently we are not considering. Now this blue, red, orange, ये सब dots जो है, these are showing us the disposal of solid waste, how much solid waste is deposited at which points. Now blue dot is like less than as you go higher to red. जैसे आप blue से red की तरफ जाएंगे, so आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा solid waste already deposit है under ocean or seas throughout the world. So this is alarming conditions, and uh, definitely we need to treat our solid waste now. This is just a disposal method. When you dispose, it is actually not treated, and it is still a hazard. So we need to look into techniques which can do treatment of solid waste. So this is a landfill site. This is scientific landfill site जो normal landfill site होती हैं. Today in India, all the mostly sites are normal landfill sites, and there it is just dumping of solid waste. However, this schematic diagram shows you a scientific landfill site. Scientific landfill site में क्या होता है? Just there is a lining, impermeable lining below and at the top. Below is to restrict the movement of leachate. Leachate क्या है? Leachate is लिक्विड जो कि सॉलिड वेस्ट से जनरेट होता है, वो लीचेट व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पे आपका सॉलिड वेस्ट है, यहाँ से कुछ लिक्विड जनरेट होगा जो कि नीचे परकोलेट करेगा और ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट करेगा. ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज हैं एट विच ग्राउंड वाटर हैज बीन कंटामिनेटेड बिकॉज ऑफ लीचिंग. तो देयर इज अ impermeable layer in scientific landfill site. There is impermeable layer. Now ये जो impermeable layer है, it will restrict the movement of leachate into groundwater, and hence you can stop it by getting contamination. Then there are some vent to for the escape of gases. Methane gases are or other gases are also generated, so that gases are collected through this pipe system, and that finally this pipe system, if it is methane, then you can use it for further calorific value. और यहाँ से जो लीचेट जनरेट हो रहा है उसको पंप के थ्रू आप लीचेट कलेक्शन टैंक में ले सकते हो. नाउ देयर यू कैन फर्दर ट्रीट इट एंड use it or discard it as per the condition maybe. Another thing, there is another coverage of impermeable layer at the top, so that यहाँ पे जो gases produce हो रही है वो escape environment में ना हो. It is very bad smell, and also it is a favorable condition for breeding of mosquitoes and flies. So ये जो cover है हम top पे भी लगाते हैं, and over this you can make plantation, like आप इसके ऊपर you can put soil and do plantation and use it as a decoration purpose. So this is a schematic, very basic and schematic diagram of scientific landfill site. So this is a typical view of landfill site. आप देख सकते हो कि कितने सारे birds हैं यहाँ पे there is another crane which is working throughout for whatever action is required. There are some animals also. This wastewater, and the condition is really pathetic, and this is actually a top of a hill, means solid waste इतना ज़्यादा generate होता है that एक छोटा सा mountain सा create हो जाता है. You can see this around every city, and which is used here. So this is a pathetic condition of landfill site. I am thankful to this article जहाँ से मैंने बहुत सारे जितने भी डेटा अभी शो किए I have collected from this article. You may refer it if you want to know more. Thank you.